Good morning, students. Today, hi. In Payal's Easy Commerce, we are starting the third module, okay, which is the chapter 4. And we are doing is recent trends in service sector, which is module 3. So, let us begin that what is it that we are starting with. So, we are doing an entire topic of BPO. ये बीपीओ क्या होता है? वी हैव लिसन टू इट, यूल सी अ लॉट ऑफ सम फ्रेंड, सम कजिन, किसी का भाई काम कर रहा है. तो ये बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ओके, और इसमें क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ फर्म, दैट इज द आउटसोर्सर, transfers its process along with the associated operational activities and responsibilities to a third party. अभी क्या होता है यूएस में, द लैंड कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव. तो उसने पूरा ये जो अपना जो बेस है, मतलब व्हेन इट कम्स अबाउट द सर्विस पार्ट, इंडिया में ट्रांसफर कर दिया है. मतलब इट इज अ you are getting paid matlab Indian rupee, but a way more higher salary because you're working for the US, but for them it is still cheap. So the BPO firm provides the required services to the for an agreed consideration to the outsourcing firm. तो ये एक BPO है. वो those, there are two classification based on work, based on location. Based on work I have is voice and non-voice, and based on location I have is onshore, offshore and near shore. We will understand this in a little depth. matlab I am explaining this entire thing, so don't worry. पहले based on work में first you have is voice. okay, तो वॉइस में क्या है? टेली मार्केटिंग का जॉब हो सकता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का है, डेप्थ कलेक्शन के लिए है, इनबाउंड सेल्स के लिए है, कस्टमर सर्विस के लिए है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए है, अपॉइंटमेंट सेटिंग्स है, कंप्लेंट्स के लिए है. ये बेस्ड ऑन वर्क है, बीपीओ जॉब. नॉन वॉइस क्या हो सकता है? डेटा एंट्री है, डेटा एक्सट्रैक्शन है, डेटा मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ट्रांसक्रिप्शन है, क्लेम्स है, लीज एब्स्ट्रैक्शन है कि अभी लीज खत्म हो रहा है, 50 इयर्स हो गए, 20 इयर्स हो गए, वट एवर द लीज वॉज सपोज टू बी, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. उसके बाद आई हैव इज बेस्ड ऑन लोकेशन. तो लोकेशन के लिए क्या हो सकता है? देखो, लोकेशन मतलब वेयर इज इट सिचुएटेड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ऑफ शोर, ऑफ ये ऑन शोर मतलब वो ही कंट्री में है ये बीपीओ का ऑफिस. और ऑफ शोर क्या है? कंपनीज उन कंट्री के बाहर है, मतलब कहां पर भी, wherever there is cheap location. lot of people work like that because it's cheaper, they don't have to pay this, and anywhere around the world the work is getting done. And then I have is the near shore. So near shore क्या है? सपोज यूएस में है तो यूएस में थोड़े उसके आइलैंड्स जहाँ पे है, या कनाडा पे है जहाँ पे थोड़े दूर, मतलब उसके बॉर्डर रिलेटेड कंट्रीज में है. सो दैट बिकम्स अ नियर शोर. ओके, सो वेट, what is voice sourcing? It is called a front office operations. There are direct interaction with the customers, mostly on phone, but can also include internet, fax, email, by other forms of interactive communications. And non-voice outsourcing is called back office operations. It is concentrates on internal business processes by concentrating more on its core business operations that can इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. मतलब वॉइस रिलेटेड नहीं है, ईमेल फैक्स वगैरह नहीं है, लेकिन अपने मेन बिजनेस में फोकस कर सके. इन May 2013 there are top 5 Indian BPOs: Genpact, TCS, Aegis, Wipro BPO, First Source Solutions. ये बहुत they are doing very good. तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज? कभी कभी लोग आउटसोर्सिंग अपने कैंटीन फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में है, कॉलेज कैंटीन में दूसरे को देते हैं बिकॉज कॉलेज वो मैनेज नहीं कर पा रहा है. आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन और सर्टेन प्रोडक्ट्स, जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ तो थोड़े पार्ट्स में कहाँ और से आउटसोर्स कर रही हूँ. उसके बाद आई हैव इज outsourcing by municipal corporation of waste collection. उनके पास स्टाफ कम है. Outsourcing of business process. लोगों ना, मतलब there are many companies who charge a bomb, जो पूरा स्टेप्स बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर पाएंगे वो पूरा आपको बताएंगे वीडियो के साथ, और उसके लिए वो लोग चार्जेस लेते हैं.
So there are various kinds of BPO, but these are just few examples. तो समझते हैं ये बीपीओ का एडवांटेजेस क्या होता है, उसको डिटेल में समझते हैं. First thing is focus on core activities. So outsourcing enables a business firm to concentrate on core activities. Key employees are relieved for performing non-core activities. Are you understanding? मतलब जो main activities है उसके लिए आई एम लुकिंग फॉर द जो एम्प्लॉइज है दे कैन फोकस ऑन कोर वैल्यू एक्टिविटीज सच एज कस्टमर रिलेशंस, product development, and focusing on core activities में enable to firm to gain competitive advantage. मतलब मेरा जब बीपीओ आएगा तो बिकॉज वो सब कस्टमर्स जो भी मेरे एम्प्लॉइज है कहाँ पर भी है वो लोग ध्यान दे पाएंगे ग्रीवेंसेस के, क्या सजेशंस है, और मेरे जो एम्प्लॉइज जो नॉर्मली मेरे में काम कर रहे हैं वो मेरा बिजनेस के लिए देख पाएंगे. तो मेरा दोनों एक्टिविटी हो रहा है एंड आई एम गेटिंग मोर प्रॉफिट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद आई हैव इज द सेकंड वन, रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट. सो आउटसोर्सिंग में अनेबल अ फर्म टू रिड्यूस इट्स expenses. For instance, a company may pay lower amount to the third party to provide certain services. देख अगर वो खुद ये कंट्री में कुछ करेगा तो उसका एटलीस्ट 10 lakhs कॉस्ट आएगा, और सेम एक्टिविटी वो दूसरे कंट्री में ऑपरेट कर रहा है तो उसको 3 लाख में उसका पूरा काम हो जा रहा है. सो ही इज सेविंग ऑन द स्पेस एंड स्टाफ एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो दैट इज नोन एज रिडक्शन इन operational cost. That is the second advantage of BPO. The third point I have is lower investments. The investment for office space or premises required for certain services which are outsourced is done by the third party. Therefore, the outsourcing firm need not invest in certain fixed assets which reduce the need for higher investments. So they are known as lower investments. उसके बाद I have is facilitates quick delivery. So in this what I have is, the outsourcing firm can deliver the goods on time in the market. So that is why it facilitates quick delivery. उसके बाद I have is specialized services. So for instance, in the case of legal process outsource, LPO उसको बोलते हैं जैसे BPO है, a foreign firm, okay, can obtain specialized services from Indian legal experts, and that too 1/3 of the cost what it is there. अभी देखो, like I have example I'll give you that जो legal है यहाँ पे okay 50,000 1 lakh में पूरा वो 8-10 साल जितना भी केस चलेगा मिल जाएगा. US में at least minimum fee would be nothing less than 3 to 4 or 5 lakhs. So when you're counting in Indian money, तो वहाँ का जो भी Indian lawyers है जो foreign में specialize करते हैं, they can really help the other country people. So they are known as specialized services. उसके बाद I have is growth of entrepreneurs. So outsourcing gives an opportunity to new entrepreneurs. Thus the outsourcing firm may benefit not only due to lower operational cost, but also in terms of quality of innovative services provided by the third party entrepreneurs. So that is known as growth of entrepreneurs. उसके बाद I have is competitive advantage. So due to outsourcing, a business firms can focus effectively on core areas with speed and agility, which otherwise they would sacrifice as and when the business expands. So that is why it is known as the competitive advantage. The 8th point I have is corporate image. So corporate image में क्या होता है? The outsourcing firm can concentrate on core areas, whereas non-core areas can be outsourced. तो that's how they are having a better corporate image. मतलब जो उसके पास है ठीक है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जो उसके पास नहीं है वो थिंग्स the company has a very good image कि दोनों काम वो कर रही है and it is giving the best service. Then the 9th point I have is customer satisfaction. So the BPO enables the firms to provide quality goods and services. So as a result the customers are very happy. And other advantages are the firm, the person who has taken the thing of the BPO, मतलब वो या outsource किया है, उसका quality work हो रहा है. BPO may enable a firm to increase demand for its products
and therefore a firm would get economies of scale. Are you understanding? So because of the cost optimization, BPO has really been a hit concept. Now we will study what are the disadvantages of outsourcing. Now, poor services. कभी कभी क्या होता है कि आपने नाम देख के किया तो है इसको सर्विस वाले को, बट वो इतने क्वालिटी सर्विस या डीले सर्विसेज हो रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहा है. So the third party either delays the services or the service provided is of poor quality. तो एक adverse impact या image of the firm भी आ सकता है, because वो आपके हाथ में नहीं है, आपने किसी और बंदे को हायर किया है, वो आपका स्टाफ नहीं है. The second one I have is exploitation of employees. The third party that provides outsourcing services may exploit its employees. There are cases where the employees are paid less and made to work for longer hours also. Because now a recession hai, so they are like, okay, then leave it. There is another employee waiting for us. So there is an exploitation of the employees also. Employee turnover. So the employees may leave the BPO firm due to poor work culture and lack of motivation, and also due to problem of night shifts. So that is known as employee turnover. Then I have is problem of sensitive information. So the third party service provider may leak information about the organization's process to competitors. तो क्या होता है, कभी थर्ड पार्टी वो कंपनी का थोड़ा लीक भी किया टू अनदर कंपनी जो उसका राइवल कंपनी एट अ 4 times more कॉस्ट. तो कभी कभी ये सब भी हो सकता है. लैक ऑफ क्लाइंट फोकस. सो an outsourced service provider may be catering to the service needs of multiple organizations. So since मतलब एक ही फर्म के लिए वो नहीं काम करेगा, वो 4, 5, 8, 10. तो कभी कभी ये क्या होता है, दो कंपनी के लिए 100% अटेंशन दिया है और दूसरे दो कंपनी में he has not really given that much good. So the BPO service provider may lack complete focus on the organizational task. The sixth one I have is hidden cost. So outsourcing through cost effective might have hidden costs such as the legal cost incurred while signing a contract between the outsourcer and the BPO service provider. Are you understanding? Uske baad I have is cultural problems. So the outsourcing firm may not understand the culture of the BPO service provider, and therefore they may lead to poor communication and lower productivity. Kabhi the cultural problems could also be a conflict and the loss of management control. See, outsourcing किया तो management के पास कोई right नहीं है. Are you understanding? Because you are outsourcing, तो वो लोग सब manage कर रहे हैं. Are you understanding? So the BPO service provider may not be driven by the same mission and standards that drives the outsources firms. The BPO service provider may be more driven to make a profit from the services that are outsourced rather than focusing on the quality standards, So he's like, okay, मुझे इधर से काम मिल रहा है, इधर से काम मिल रहा है, ठीक है ना, एक दो लूज भी हो गया, मैंने तो मेरा काम किया मेरे एंड से जितना हो रहा है with my staff. So these are the pros and cons. I hope students the topic has become very simple. I have taken from Manal Prakashan, Vipul Prakashan and a few examples from internet. Thank you students. Hope this concept has now become very easy.